गाइस, ये मैं वापस आ गया हूँ और आज मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो मैं आपको 5 पार्ट्स दूंगा इस वीडियो के। तो एक होगा वो घाना से इथियोपिया और इथियोपिया से दिल्ली, वो आपका 3rd पार्ट हो जाएगा। और फिर दिल्ली टू रांची, तो दिल्ली टू रांची वो आपका 5th पार्ट हो जाएगा। वेट, मैं कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ एक पार्ट होता है, फिर इधर से वो 2, तो हमारा 4 ट्रिप्स हो रहा है। तो मैं आपको 4 पार्ट्स दूंगा इस वीडियो का। घाना का रोड वगैरह दिखाओ, घाना का ये। तो ये देखिए, ये एक ब्रिज बन रहा है 1 साल से पूरा, अभी भी नहीं बना है। ये थोड़े से लोग हैं इधर और ये मेरे पापा हैं, गाड़ी चला रहे हैं। और ये पूरा लगेज है, पीछे भी बहुत ही लगेज है गाइस। और ये एक दुकान था और यहाँ ये फ्री गाड़ी सेल के लिए रेंटल, वो आपको करना तो कर सकते हैं। घाना के बारे में बताओ। घाना अच्छा है, घाना अच्छा है, लोग अच्छे हैं, कल्चर अच्छा है, चीज सामान बहुत ही अच्छा है। तो ये आपको दुबई ऑटो मिलता है। ये एक कार शोरूम है जहाँ से आप कार रेंटल कर सकते हो। ये एक प्लेग्राउंड का जगह है। तो ये मटका वटका आप यहाँ से खरीद सकते हो। मोस्टली प्लेन यहाँ से गुजरता है, लेकिन आज मैं कोई प्लेन्स नहीं देख रहा हूँ, तो वो एक अनफॉर्चुनेट टाइम होता है। तो अभी के लिए इतना ही है, लेकिन मैं आपको और दिखाता हूँ। सिंस आपको जानना है, अगर आप घाना आओगे तो घाना आकरा स्पिनटेक्स कभी आओगे तो आपको एक व्यू मिल जाएगा कैसा दिखता है घाना। तो ये इस साइड का भी मैं आप दिखा दे रहा हूँ। ये इस साइड के ये दीवार के उस साइड पूरा एयरपोर्ट का लैंड है। देख सकते हो आप, एयरपोर्ट का लैंड थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। तो ये दीवार के उस साइड पूरा एयरपोर्ट का लैंड है। आप ये दीवार देख रहे हो, बड़ा सा वो जो वॉल आ रहा है, उसके उस साइड एयरपोर्ट का है। और ये मूवेबल हाउस है, ये आप रेंट कर सकते हो पार्टीज के लिए। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी होता है। और अब हम लोग एयरपोर्ट आने ही वाले हैं। तो हाँ, वो आप देख सकते हो, वो जगह पूरा एयरपोर्ट का है। तो हम लोग अभी वहाँ ही हेड कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो, उस साइड का पूरा वो एयरपोर्ट का ही लैंड है। तो ये है पूरा वो स्काई, बहुत ही मौसम जैसा लग रहा है। मौसम बहुत ही फ्रेश लग रहा है, नया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे कुछ नहीं होता, बस खाली ग्रास है। और वो आप ट्रायंगल वाला एक नहीं देख पा रहे हो, वो वाला जो कि एक बिल्डिंग टाइप है। तो अभी सिटी गैलरी ये सामने ही है, सिटी गैलरी है। ओके गाइस, सो अभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। सो सिटी गैलरी, देयर इज सिटी गैलरी एंड देयर इज बिल्डिंग। दैट big thing right there is a hotel, and the grass seems pretty green, and we are just going under a tunnel out, and that's all the luggage and all that. So it's stable and horses. So this side is the stable. It's like a horse riding place. You can rent a horse and you can do the golf thing, or what you guys call it, something. And do you see those colorful buildings? Those things, those are the main houses. Those are the most expensive. So you can see bouncy castles over there. I don't know, yeah. I don't know if you guys can see it that well, but you guys saw that was a type of house, a horse rental place. So now we're just in the city area. There is a lot of things, and as you can see that pillar, we are almost to the airport, and we are about to be there. So you guys can see the Christmas gathering. They had a sponsorship December and GH. So yeah, you get this, you get all these sponsoring flags. You see these flags, they sponsor this land and this piece of land. And you can see me, I'm wearing a Christmas hat and this, and my outfit looks pretty chill, and I'm wearing these shoes. So as you can see, these things are for sponsoring, and there's a big building right there. From there we're gonna take left. I don't know, that's the airport, I think. Wait,
Yep, that's the airport right there, and we're just heading there right now. And the scent of Africa and all this. The Christmas lighting over here is not up like right now, so you can just see the frame of the night time. Lighting miss कर रही है तुमने कोई नहीं We missed the lightning a little, so yeah, that beats it. And we are about to go to the airport, and that big thing right there is the airport. That like, वो होटल में दिखाना है जो फ्लाइट में है oh yeah, sure. And there's like a type of airplane, like old vintage airplane, or like there's a type of airplane over here. And like that's the place for the departure. Like when you land, you go there and pick your people up. And we're going to that airport since like it's kind of not a big deal. And you get this like a hotel and all that. I don't know where the airplane is since I haven't also seen it in a long time, guys. I think it's somewhere around here. Yeah. So we are about to head over there, and there's a big car right here next to us, and so we're currently going. That's Holiday Inn. This is like Africa World Airlines, and that's like a Holiday Inn. It's like a type of how do I explain it? It's like a type of thing. Currently collecting our ticket to the ticket pass, and the thing is opened. This side is also opened. And there are lots of people here. Like apparently the whole place has been Range Rover. Nice find, bro. There's a lot of cars over here. So I'm gonna end the part 1 over here. So see you guys in part 2. Bye.